So, hello and welcome everyone. Do you want to play the game which can increase your stock market knowledge? Do you want to improve your knowledge playing games? Are you looking to improve the knowledge of your whole family just playing the game? Then here is the game which can improve the knowledge of all family members just by playing with fun. So, how and what are the steps for playing this stock market game? I am going to explain you step by step on how you can play the game. First of all, these are 50 cards. So these are nifty 50 cards 1, 2, 3, 4, and 50. So there are total 50 cards. It means nifty 50. First card would be some company from Nifty, right? So all the cards belong to any particular company from Nifty 50. So how we will play the game? Steps to play the game. Number one, distribute all the cards between all family members. Or if you are playing this game with your friends, you can distribute the same quantity of the cards with all the friends. Minimum size for playing this game is 5, right? So if you will distribute this 5 card among all the members, at least 10 cards, that is 10 nifty companies would be going to your some and other family member. After distributing all the cards, place all your cards upside down on the table in front of you. You should not know which company would come first. Now, who will start the game? Because the person who will start the game has some probability to stay ahead. So pick the first card up, check the market cap. Let me check my card. So this is NTPC, and the market cap of NTPC is, as I can see on the card, 1.5 lakh crore. So ask all the family members to tell you which company is having highest market cap among their first card. So all the player will select their first card and check their company's market cap, right? So if so, while playing the game, some market cap of the companies would be memorized in your brain automatically. The more you play, the more you will be aware about the numbers. The player having highest market cap will start the game. All right. So before you start the game, ask all the player to shuffle their own card so that any company could come with the hierarchy number one, number two, number three. You do not know which company is first, second, third, and fourth. All right. Now, the first member whose market cap was highest should start the game. He will pick his card. He will check all the data which are written on his card. So the data which are written on the card are two types of data. Positive point which you can highlight. For example, which positive data are good for your company. For example, market cap is written. So the more the market cap, that's better your company, right? Equity is written, sales is written, profit, EPS, return on equity, margin. These all are some of the positive point of your company, right? When you are playing, you can announce any of the point which you think should be among the highest of all the players. First card, right? Here some negative point are also written. For example, price to earning ratio and debt to equity ratio are also written here. So for example, if you get the card of Reliance, what you will say? If Reliance card is in your hand, there's a high probability, not high probability, but it's 100% probability for your winning. If you will say what? Either profit, or if you can say market cap.
Because Reliance is having highest market cap and highest profit among all the companies. So if you will announce that my company is Reliance and I am throwing you that if anybody has more market cap than my company, please tell me. Right? So there are chances that you will be winning. But if you will say, for example, sales, that Reliance Industries sales is 7 lakh crore and you want to say anybody if having more sales than Reliance, there is the less probability of losing, but there is the probability. Why? Because IUC is having more sales than Reliance. So what you should say in the case of Reliance, announce market cap or profit. Right? For example, if you are having debt to equity ratio, for example, if you are having Infosys, what you can say? You can say debt to equity ratio, right? Or you can say ICR, right? So Infosys is a debt-free company. Its debt paying capacity is also highest in hundreds. So what will happen if you will announce ICR or debt to equity ratio for Infosys? Probability of your winning are high. So this is the way you can play the game. So in short, you should announce that point which can assure your winning probability higher. Now, after your announcement of highlighted point, if any player has more point than you, for example, you said Dani put and you opt for sales, somebody is having more sales than your Dani put, who will win? That player will win, right? So after your announcement of highlighted point, if any player has more point in the case of positive point, or in the case of negative point, he is having lesser point, then all other player will surrender their card to that winning player. So what happened? One card from all the player is gone to the winning player, right? So in this way, the loser will always lose his card and winner will win his card as you proceed the game further, right? The winning candidate, the winning candidate will now pick his card without saying, right? So everybody should place their card upside down. The winner player collect who have collected all the cards will place all the cards below their existing card, right? Now what will happen? The winning card, the winning candidate will now pick his card without saying and announce the best point from his company. So play in the same way and winner will collect all participated cards. You will see some player will lose all cards at least after the 10th game if there are 5 players. So the player who collect all the cards will be the winner. Some players would be losing all the cards. If you play this game regularly with your family members or with your other investor friends, what will happen? Many of the important data like market cap, sales, profit from it, return on equity, ICR would be memorized automatically by fun. Investors or your family members will know that, okay, ROE, the more is better, right? ICR, the more is better. Debt to equity, the lesser is better. So this is the way you can play the game, right? Thank you. कितना है सर आप कंपनी कौन सा है? HDFC होम लोन पर मार्केट कैप 415768 4,15,000 मार्केट कैप किसी का ज्यादा है उससे? यस सर, 5,90,000 यस। कौन सी कंपनी है? ऐसे बैंक। ओके, कितना है? अरे ठीक है, चलो। और किसी का है 7 लाख से ज्यादा? डेविड भाई, मार्केट इतना नहीं करने का सर, एक ही कार्ड, फर्स्ट कार्ड अपने फर्स्ट कार्ड ही, हाँ एक ही कार्ड लेने का, बाकी सब उल्टा। 7 लाख से ज्यादा है? नहीं है, चलो अभी सब कार्ड रख दो वापस, ठीक है। नाउ सर वी स्टार्ट द गेम, ठीक है। अभी हाँ, मैं आपको समझा देता हाउ टू प्ले। आपका जो कार्ड है वो आपको फर्स्ट पिकअप, अभी शफल कर दो सब, पहले शफल कर दो सर। बंकिम जी, शफल कर दो।
शफल कर दिया? अभी आपने शफल कर दो, साथ में कर दो सब। हाँ हाँ ठीक है, आपको फर्स्ट कार्ड पिकअप करना है और आपको लगता है कि वो कंपनी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या होगा। बाद में 2 मिनट सर। अब इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए एक बार। इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए। आपका जो कार्ड है उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आपको क्या लगता है? हाउ विल बी यू एबल टू बीट बाकी के प्लेयर्स को? जैसे आपका मार्केट कैप सबसे हाईएस्ट था, आपने सबको बीट कर लिया, वैसे आपको जो भी अभी नाउ यू हैव टू सिलेक्ट कि मेरे कंपनी में नो वन विल ओपन द अदर कार्ड्स। सर कोई खोलेगा नहीं, सिर्फ सर खोलेंगे, ठीक है? हाँ कह दो। हाँ देखो, सब में हाईएस्ट देखने का, मार्केट कैप हाईएस्ट रैंक, लेकिन पी में क्या देखने का? लो पी मतलब अच्छा, हाई पी मतलब नॉट गुड। तो पी में क्या देखने का? सस्ता, महंगा नहीं, ठीक है? क्लियर? हाँ और एक चीज, नेगेटिव में आएगा मतलब बुरा, ठीक है? बोलिए सर। माइक सर। ROE 15.67। ओके, आपका आरओई कितना है सर? आपका कितना? डेबिट बजट चालू करेंगे। फर्स्ट कार्ड आरओई 11.8। कार्ड दे दो। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे सर, एक मिनट, यहाँ पे कितना? आरओई 2 का डेंजर। कितना आरओई? कंपनी का नाम है अडानी पोर्ट। बंकिम जी का कंपनी है इन्फोसिस। आरओई कितना होगा? 30.64। चलो इसको कोई बीट कर सकता है? सर जी आपका कौन सा कार्ड है? कंपनी बोलिए। एशियन पेंट। आरओई अरे 23। अरे थोड़े से दे दीजिए सर, कार्ड दे दीजिए सर। आपका कंपनी सर? एक्सिस बैंक दे दीजिए। यस हाँ कंपनी का नाम बोल दीजिए। एक बाइक ले लो तुम्हें कुछ। ONGC 17। सबसे हाईएस्ट किसका था? बंकिम जी। ये सब कार्ड किसके? बंकिम जी के। अभी ये रखो। चलो नेक्स्ट कार्ड ग्रासिम। और क्या लेना है आपको? सिलेक्ट कीजिए। टीम से बात करके डिसीजन ले सकते हैं ना। आपकी भी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा क्या है? जल्दी होना चाहिए, टाइम नहीं है अपने पास गेम में। क्विक फायर। बंकिम जी क्विक फायर। सर किसी को कार्ड देखना नहीं है अभी? अपना पार्टिसिपेंट को कार्ड नहीं देखना है सर? कार्ड नहीं देखना है? कार्ड ले दो। चलो कार्ड बोलो। चलो ग्रासिम का सेल्स है 95,000 करोड़ सेल्स ग्रासिम का। चलो डेविड भाई आपका कितना है? डेविड भाई 46। कौन है भाई? अरे रिलायंस है यार, बाकी बात ही रिलायंस। अभी ये उल्टा कर दो, सब रख दो, दे दो, ये ले रख दो। चलो रख दो अभी इससे। नेक्स्ट चलो अभी आपको सोचो अपना कौन सा कंपनी करेगा पोर्टफोलियो। पेपर लीक आने की सही पड़ नहीं है, मुझे तो पता होनी चाहिए कि हमारे पोर्टफोलियो का डेटा क्या है। गेम का विनिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। हिंडाल्को है 6। हिंडाल्को कंपनी P6। हिंडाल्को P6। बड़ा अच्छा पॉइंट निकाला है। विप्रो 22। मेरा जो है वो 91 है। टाइटन। इंडसलैंड बैंक PE 15।
कितना तो, सबसे लोएस्ट कितना है? अरे कोई 6 से कम है पी? 5? कौन सी कंपनी है? टाटा कंज्यूमर 5? आपने सर आपने मार्जिन देखा होगा। चलो 44। फ्रेंड्स ये पार्था जी चलो फ्रेंड्स, लास्ट ट्रेड ऑफ द गेम, ठीक है? लास्ट सौदा, आखिरी सौदा। 3 बज रहे हैं। लास्ट 3:27 हो गए। कौन सा कंपनी आया है? कौन सा कंपनी आया, जोर से बोलो। हेलो फ्रेंड्स, कार्ड नहीं देखने का सर। ओए अंपायर देखो, इधर देखो, इधर अंपायरिंग करो। ऑर्डर हाँ, अपने को भारती एयरटेल जल्दी 1 2 3। ओके मैं बोलता हूँ, चलो। इनका भारतीय एयरटेल है और उनका बैट है मार्केट रैंक नंबर 9, इंडिया 9th लार्जेस्ट कंपनी। बोलो। और 6 सबसे पहले है। 6 के नीचे कोई है? 6 के नीचे सर ला दे दो। अरे रैंक पहले ही है। हाँ अभी तो हो, चेंज नहीं करो। चलो ऐसा मैंने छोड़ दिया। हाँ वो 7 था, एक जन का 7 था, 6 और 7। ओ एनटीपीसी नहीं। तो कौन जीता ये नंबर? अरे क्या बस। चलो तालियां। अपने टेबल पे कितने कार्ड्स है वो काउंट कर लो फटाफट, विद इन 10 सेकेंड्स। हाँ थोड़ा काउंट कर लो और काउंट कर लो। अपने टेबल के काउंट्स कर दो। 10 कितने सर? कार्ड कितने? 2 कितने? 2। यहाँ पे 10 है। 9 यहाँ पे कितने हैं? कौन सा टेबल है? काउंटिंग चालू है। 18 कार्ड्स हैं यहाँ पे। पार्था जी 18 से ज्यादा किसी के पास है? तो पार्था जी का टेबल नंबर 1। भाई एक टेबल का स्टॉक हो गया। चलो लेट्स मूव ऑन फ्रेंड्स।